बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस विद आतिफ mengal के साथ मैं हूँ आतिफ खान। तो आज का हमारा टॉपिक है वो वोकेबलरीज के बारे में। तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई आप वोकेबलरीज भी शेयर करें, तो मैंने कुछ वोकेबलरीज जॉन न्यूज़पेपर से निकाले हैं। तो चले भाई अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला वोकेबलरी है लूफ, LOOF, लूफ। लूफ इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है जिसके मतलब है दूर करना। दूर करना इसका मतलब है लूफ का। लूफ एक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, मींस दूर करना। हमारा सेकंड जो है वोकेबलरी वो है अराइव। अराइव इज आल्सो अ वर्ब, मींस पहुंच जाना। इसको हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, आतिफ अराइव्स एट कोयटा, मींस आतिफ कोयटा पहुंच जाता है। अराइव मीन पहुंच जाना। फिर थर्ड हमारा है अराइज। अराइज इज आल्सो अ वर्ब, मींस उठना, उभरना। एंड लास्ट वन इज अपीयर। अपीयर इज आल्सो अ वर्ब, मींस जाहिर, जाहिर होना या जाहिर करना अपीयर का मतलब है। तो ये 4 वोकेबलरी हो गए। चलते हैं कुछ और वोकेबलरीज की तरफ। पांचवा वोकेबलरी है प्ले। प्ले मीन खेलना। प्ले इज आल्सो अ वर्ब, which means खेलना. How we can use play in sentence? Atif is playing cricket. Atif cricket खेल रहा है. It is a verb and it means खेलना. And fifth one is, or sixth one is cook. Cook is also a verb. It means pakana. Kana pakana means pakana. How we can use cook in sentence? She cooks food. वो खाना पका रही है. And last vocabulary is change, means तब्दील करना. It's also a verb and we can use change in sentence. Ali changes his clothes. अली अपने कपड़ों को तब्दील करता है. ये हमारा लास्ट वोकेबलरी था और ये थे आज का हमारा टॉपिक वोकेबलरीज के बारे में। इंशाल्लाह और भी वोकेबलरीज होंगे। ये 8 वोकेबलरी थे आज की इस टॉपिक में। इंशाल्लाह और भी वोकेबलरीज होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को